to all of you. Before we dive into today's topic, let me introduce myself. I am Jasleen Kaur, a final year student at BVIMR College, New Delhi. Today we have with us Mr. Anoop Prakash Awasthi, who is an advocate on record at Supreme Court of India, a registered GST practitioner and an IBC practitioner. So let's stay tuned as we unravel the fascinating stories of GST, its global presence and how it impacts our lives. So what exactly is GST? GST is Goods and Services Tax. Okay. That is its full form. Okay. And in India, we are having three types of GST. That is CGST, that Central Goods and Services Taxes. UTGST, that Union Territory Goods and Services Taxes. And IGST, Integrated Goods and Services Taxes. Okay. So these are the three types of GST we are having in our Indian system. Okay. One principle we have, one nation, one tax. What are your views on that? See, prior to the implementation of goods and services taxes, the Indian country, the tax was necessary a subject that was coming under the state as well as under center. So there was a problem of multi-taxation, double taxation, cascading effects, and tax upon tax. So ultimately, the ultimate loser was the common man. And that was also actually causing a lot of loopholes. The collection was a big issue. Tax evasion was a big problem. So it's not that it is implemented in 2017. It has been conceptualized also in 2017. The genesis for it may go long back. And the idea about putting this kind of a comprehensive tax, indirect tax reform in India goes back to 2000 when a committee was appointed, and later after a lot of discussions and culling out the apprehensions of a state that they are going to lose in this system. Okay. They could somehow come to a consensus, and in 2017 we are having goods and services taxes. Okay. My next question is, how did GST originate? GST की origin की शुरुआत हुई कहाँ से और इंडिया में कैसे आया? Fine. Actually, GST जो है ना एक तरीके से tax reform. It's an idea and it is not India specific. Origin आपने पूछा, बेहतर सवाल है इसकी. origin जो हुई है वो फ्रांस में हुई है और टैक्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रिसर्च की, कैसे टैक्स इवेजन को मिनिमाइज किया जाए, जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर ना हो, इंटेंडेड जो पर्सन है उसी से टैक्स लिया जाए. एक्चुअली होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे गरीब होता है उसके ऊपर टैक्स बर्डन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर वो होता है. तो यहाँ पे एक मल्टी स्टेज टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आया गया. हर एक स्टेप पे टैक्स, और जिसने और सबको टैक्स देना है, लेकिन जो अल्टीमेटली जिसने उसको यूज करना है वहां पे टैक्स का एक्चुअल इम्पैक्ट होएगा. बीच में जिन्होंने टैक्स दिया है ना उनको वापस होता चला जाएगा. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म ये शुरू किया, और चूंकि फ्रांस इसमें पायनियर था और उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और एक सिस्टम लिया, और दैट वाज स्लोली ग्रेजुअली दैट बिकेम एन अडॉप्टेड, दैट वाज अडॉप्टेड अक्रॉस द ग्लोब. एंड यू वुड बी वंडरिंग दैट today, as on date, more than 160 countries in the world have shifted from their traditional indirect tax regime for the purpose of collection of domestic taxes to goods and services taxes. Okay. So, sir, earlier you said there are different types of GST like SGST, UTGST, CGST. How a common man would differentiate between these? Okay, fine. See, I told you that it is the central government that collects the goods and service taxes. So if the supply is intrastate, then it will come under the CGST system. Okay. Central goods and services taxes. If the supply is intrastate within a union territory, then it shall fall within UTGST. But if it is between two states or two or more states, then the IGST, the integrated goods and services taxes, that comes into picture. And apart from the nomenclature,
I do not find any significant difference between UTGST or CGST or IGST. It is how it is collected. It is a mode of collection. Okay, sir. Yes. So, sir, can you please explain what was VAT and mod VAT before the GST was introduced in our country? Fine. So if you ask about mod VAT, so it was introduced long back in 1986 by VP Singh, then Finance Minister in the Rajiv Gandhi regime, and I would say that was the first step taken by any government, major step I would say about the tax reform, indirect tax reform, and then came VAT post 2000 and the modified value added tax. Now the VAT is value added tax. So instead of taxing the entire commodity as a whole, if any manufacturing was happening, then it was a stage wise taxation, that in each stage whatever was the value addition, tax was imposed on that value added, that addition in value. So it was also for the purpose of reducing the tax evasion and making the system more tax compliant, and also reducing the ultimate tax burden to the end consumer. So that regime continued for long. Then simultaneously therewith we experienced service taxes, that was a tax on services, and in 2017 we have come with goods and services taxes. So it is a destination based tax. Okay. So each and everyone has to first pay, and those who are entitled to get it back, they will get the input tax credit. So if you are actually not if you have paid tax which you are actually not required to pay, you will get it back. Okay. So each one is required to, whosoever are in the system, they are required to pay it. But if the system does not actually requires you to pay, if you pay, you will get it back. So you will get tax refunds, GST refunds, input tax credit. So this is little complex, I would say, but if you delve deep into that, you understand it better. It is not that kind of complex. Okay. Yes. What makes GST so impactful? Let us look at its benefits and challenges. क्या फायदे आप बता सकते हैं GST के? फायदे अगर हम कहें तो एक तो आपने शुरू की बात की थी वन नेशन वन टैक्स. हाँ जी. सो एक जो टैक्स की जो यूनिफॉर्मिटी है, जो क्लैरिटी है टैक्स में, किसको कितना टैक्स पड़ेगा वो अक्रॉस दी कंट्री क्लियर हो गया. दूसरा चीज है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में जो कलेक्शन वाला एजेंट है, वो जो एजेंसी है, दैट इज सेंटर, इट इज नॉट द स्टेट. पहले क्या होता था, सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग टैक्सेस लगाते थे और अल्टीमेटली सेम चीज पे सेंटर भी टैक्स वसूल कर रहा है और स्टेट भी टैक्स वसूल कर रहा है, तो टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता था, उससे परेशानी होती थी. तो अभी एक तरीके से टैक्स डेमोक्रेसी है. आपका एक पॉइंट पे टैक्स वसूल हो रहा है, कौन वसूल कर रहा है, सेंटर वसूल कर रहा है, और उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद जो भी हमारे टैक्सिंग सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म है उसके हिसाब से. तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा रिफॉर्म उस लेवल पे रहा है. दूसरा चीज़ क्या है ना, जो टैक्स इवेजन की प्रक्रिया थी उस पर भी काफ़ी रोक लगी. कलेक्शन स्मूथ हुआ. अभी आप महीने भर के आंकड़े देखते होंगे, लाखों करोड़ रुपए की बात होती होगी. जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हुआ, 1.5 लाख करोड़ हुआ. तो अगर टैक्सेस कलेक्ट होके आवेंगे तो हमारे इंफ्रा में, हमारे हेल्थ सर्विसेज में, सोशल सर्विसेज में, बहुत सारे जहाँ गवर्नमेंट को खर्चा करना है उसके लिए रेवेन्यू आएगा, खर्च कर सकते हैं. तो अब ये जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम अभी उनको लेके आए, इससे मुझे लगता है कंट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतर रिफॉर्मेटरी जो मूव्स उनके थे उसी की दिशा में एक बड़ा कदम पीछे 5-7 साल का रहा है. जैसे कि कहते हैं कि हर चीज़ के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, फायदे और नुकसान भी. तो इसी तरीके से क्या जीएसटी के कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे? व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ऑफ जीएसटी? जसलीन, जब ये लागू हुआ था तो किसी को कुछ साथ खास समझ में नहीं आ रहा था. तो हालांकि जो वैल्यू एडेड टैक्सेस का पुराना सिस्टम था उसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लागू करने की कोशिश की गई. तो इनको सबसे बड़ा चैलेंज जो था, जो एक तरीके जीएसटी कलेक्शन का एक जो नेटवर्क है उसको लेके आना. दूसरा चीज़ है जो फाइलिंग थी. जीएसटी हम जो फाइल करते हैं
वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रही है, अभी भी है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं हुई है। अगर आप थोड़े से भी बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं तो आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है अपना। फिर जो जो रेट्स है ना, एक चीज़ पे एक्स, दूसरे चीज़ पे वाई, तीसरे चीज़ पे जेड, जो जो रेट डिफरेंसेस हैं, इनसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अब कंपोजिट सप्लाई आप एक लेके चले, उसमें एक पूरा गुलदस्ता है टैक्सेस का, आप समझ रही हैं, तो आप तो इतना आसान नहीं है। तो आपको जीएसटी की समझ वो चाहिए, जीएसटी के साथ अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखने की। तो चैलेंजेस तो हैं, और बिजनेस जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको कई जगह परेशानी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट है कि जो भी पहले के टैक्स रिलेटेड चैलेंजेस रहे हैं उनमें से काफ़ी आगे है, कई स्टेप आगे है। तो मुझे लगता है कि विकल्प नहीं है, इसी को और बेहतर करना है। आजकल हमें बहुत सुनने में भी आ रहा है, जैसे कि ट्रेंडिंग में चल रहा है पॉपकॉर्न टैक्स, तो आपका क्या व्यू है इस पे? पॉपकॉर्न टैक्स में आपको क्या बताऊं, ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही थी, उस पर मीम्स निकल आए, और उनके कहने की जो बात थी वो मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ अगर नमकीन है तो उस पर टैक्स रेट दूसरे हैं, वही अगर मीठे फ्लेवर में है तो उसके ऊपर जीएसटी के जो टैक्स रेट हैं वो दूसरे हैं। तो आप पैकेजिंग कैसे करते हैं उससे टैक्सेस में चेंज आ जाता है, जो रेट के अंदर जो वैरायटी है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पॉपकॉर्न टैक्स जो आप बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल में जीएसटी का बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम सिंप्लीफाई करने की जगह उलझा तो नहीं रहे। हमें चूंकि चीजें कई बार समझने में दिक्कत हो जाती है, और आप बहुत हाई लेवल की जो टैक्स डिसिप्लिन या उसकी मैकेनिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन मैन, कॉमन बिजनेस पर्सन। सो वी नीड अ बेटर सिस्टम, दैट system which helps an ordinary person to pay taxes honestly, not to hire another professional to understand it and then pay taxes. So हम यहाँ कास्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं, टैक्स का जो इम्पैक्ट है कम से कम हो उसकी बात कर रहे हैं। पता लगे हमें 4 प्रोफेशनल हायर करने पड़ रहे हैं तो उनकी सैलरी और वो तो हमारे ऊपर और बर्डन आ जाएगा। तो दिस इज द रियल चैलेंज, दिस इज द पॉपकॉर्न चैलेंज ऑफ जीएसटी। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छे से ये पॉपकॉर्न टैक्स के बारे में बताया। जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ कैसे? जैसे कुड यू प्लीज प्रोवाइड अस एन इंसाइटफुल ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री, हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड? See, in 2000, when Vajpayee's government was in center, the coalition government, that time they came with this idea. So the finance minister of West Bengal, Vijit Sen Gupta, if I'm not wrong, he was appointed the chairperson of that committee, and that actually made lot of deliberations with the states. The biggest fear of a state was that they would lose revenue in GST regime. So in order to provide a cushion to them, when GST Act was implemented, it also implemented another law for compensation of these states. Okay. So that nobody should get less than what they used to get in pre-GST regime. So it was really challenging, but they had no option. Tax reform was required, mandatory, if you want to be global power, global economic power of not multi-million, multi-trillion economy. Yes. Then you need to be need to have very robust kind of tax system, and they came with GST and networking, and prior to that, obviously, since the tax is also coming within the center as well as states jurisdiction as per our constitution amendment was also required to be done. So 101 constitution system, and that is a very auspicious number if we go by our mythology. So 101वां संविधान संशोधन हमने किया in order to get this. और जो पीछे की हिस्ट्री रही है पिछले 7 साल की ऑलमोस्ट जीएसटी पोस्ट जीएसटी, वो मुझे लगता है कि दैट इज क्वाइट कन्विंसिंग दैट वी आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। बट अभी भी यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जब जीएसटी से रिलेटेड कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो सिस्टम है वो अभी अच्छा नहीं है। हमारे जो जीएसटी का सिस्टम था उसमें बात थी कि हम एक ट्राइब्यूनल लेके आएंगे जीएसटी से रिलेटेड, वो अभी भी नहीं आया है।
और उस पर काफ़ी काम हो रहा है, बट आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का जो फर्स्ट स्टेज है वहीं तक हम पहुँचे हैं। अभी हमें काफ़ी सारे और स्टेजेस पे जाना पड़ेगा। So, sir, what are the impacts of GST on our India's economy? You see, in last 7 years, the economy has actually outperformed the other economies of the world. Okay. So one of the key factors that propelled that growth is our tax reform GST. It has infused a kind of confidence among the players, the economic factors, those who are doing business in India, that the system is the regime is really determined to reform the system. So that's a very good message. Another important thing is that since it is a collection that is being done by the center, so the unity of the system, clarity, transparency and accuracy, predictability, all those things are in this kind of taxation. Okay. So I think that's a good step. And at the very same time, I would like to tell you that GST is not covering everything. Certain things are not covered under GST. So, can you please list those things which are not covered in GST? Yes. See, for example, the tax on petroleum products. Your petrol, diesel, and other petroleum products, they are not under the GST regime. And that chunk of tax that is received by state governments as well as by central government is huge. You just Google and you will find the data that that's a very great and big revenue generating source for the respective governments. Another one is the tax on electricity. Okay. And the liquor that you use for consumption. You might have heard that in the new year, EU, Delhi, I think, was second. UP topped in liquor consumption. So Exactly. tens of thousands of crores worth liquor was consumed across the country. So that is one where this GST is not applicable. And these are otherwise very robust and very big source of revenue for the respective governments. Okay. Yes. So, sir, what are the future aspects of GST in India? As on date, as far as indirect tax reforms are concerned, I think near future I do not see any alternative to this. But you never know. There are so daily something new comes, and so next day we may have different kind of economy, different kind of economic challenges, and since we are getting more digitized, so and digital tax is a concept which is now coming into reality. It was actually limited to the multinationals. Now that is also becoming a reality. So I would say that in future we have a step ahead, but in next 20 years I don't see that we are going to have any other alternative than what we are having, the existing regime, goods and services taxes. Okay. What a journey we have been through from understanding the basics of GST, exploring its origin and discovering its global reach. Thank you so much, sir, for coming here. Thank you, Jaslyn. You have been a gracious host and you asked very good questions, and I wish you all the best for your future interviews, pursuits and talk shows. Thank you very much. Thank you. Until next time, stay curious, stay informed, and keep striving for progress. We shape a brighter tomorrow. Thank you.